Namaste. So now let's craft out an answer for Article 1 to 4. Basically, anytime that you are writing an answer, a very short answer that is, on states, on parliament, does parliament have exclusive and plenary powers for reorganization of states? That is the question. Parliament has exclusive and plenary powers with respect to reorganization of the states. Comment, elucidate, detail out, whatever it is. Alright, so this is what we write. So we are talking about territory of India. India, that is Bharat, shall be a union of state. I don't believe that I need to get into the details of this. ये तो आप prelim से already करके आ ही रहे हैं, right? And the territory of India shall comprise the territories of the states, the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired. At the time of my shooting this lecture, this I've taken from the official government portal, we are at 28 states and we are at 8 union territories because Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu have been merged into one. Jammu and Kashmir यहाँ पे is one, Ladakh is one, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and we are at 28 states as of today. If you're watching this lecture at a later date, please do confirm from the India portal. ठीक है जी. Now, Article 2 में जरा देखेंगे. Admission or establishment of new states, Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. अरे बल्ले बल्ले, राइट, बल्ले बल्ले यूपी. ये तो पूरा का पूरा इन्होंने काम कर दी, सारी पावर दे दी. लेकिन लेकिन यहाँ पे देखिएगा, एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी नहीं. सो पार्लियामेंट कैन नॉट एडमिट और एस्टैब्लिश अ न्यू यूनियन टेरिटरी. This can only be done by a constitutional amendment. So if you've gone through that amendments wala lecture, you will notice Goa ke liye humne amendment kari, Daman Diu वगैरह के लिए amendment करी. So we acquired them. To acquire a territory, you need not basically get a constitutional amendment. You can just acquire it. Go ahead. But to convert it to a union territory, you will need to pass a constitutional amendment. Because Article 2 is not talking about ये आपका new union territories. It's only talking about the states. Alright, so do mention this because if you explain this aspect, तो फिर काम बन जाएगा. Alright, power under Article 2 is very wide, but it cannot override constitutional schemes. This was given in R.C. Paudyal versus Union of India. If you can remember this case law, great. Even if you can't, I'm fine with it. Article 3, formation of new states and alteration of areas, boundaries, and names of existing states. Parliament may by law. So that means Parliament has to pass an act, right? Open Bear Act to Article 3. If you cannot see this, I think now you can. Form a new state by separation of territory from any state. I'm not going to read out this entire area, but we have to remember the keyword in ये आपका जो क्लॉज सी है, that is diminish the area of any state. ठीक है जी. अभी उस पे आ रहे diminish पे एक बहुत बड़ी reference आई थी 1960. We're just going to come to that. अच्छा. Provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament. So this bill can be introduced in either house of parliament except on the recommendation of the president. So you have to have the recommendation of the president to introduce the bill in either house. And unless whether proposal contained in the bill affects the area, boundaries or names of any of the states. मतलब इन्होंने grounds दे दिए. क्या क्या ground है? Area, boundary or name of any of the states. The bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its views. तो जैसे जैसे एरिया के अगर हम कोई छेड़खानी कर रहे हैं, हम कोई बाउंड्री पे छेड़खानी कर रहे हैं या हम कोई नाम पे छेड़खानी कर रहे हैं, the president has to take the view of the state legislature और कोई binding नहीं है, and president has to specify the time period in which the state can get back to the president. Well, if they don't, the president can still go ahead. अच्छा. Explanation 1. In this article in clauses A to E, state includes a union territory. ठीक है जी. A to E में state includes a union territory, but in the proviso state does not include a union territory. What is a proviso? So provided that जहाँ से शुरू होता है, legally it is called a proviso. Alright. So no bill for the purpose. Basically अब भाई ऐसा है, union territory है, union का head कौन है? President. अपनी ही territory के बारे में उसकी लेजिस्लेचर से तो नहीं पूछेगा, जो उसका मन करेगा वो करेगा, मालिकाना हक है उसके पास. स्टेट्स में ऐसा नहीं. तो जब जब एरिया करना हो, बाउंड्री करनी हो या नेम बदलना हो, स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू लेगा. ठीक है जी. तो प्रोविजो में इन्होंने यूनियन टेरिटरी नहीं इंक्लूड करी, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं स्टेट इज इक्वल टू यूनियन टेरिटरी. तो यूनियन टेरिटरी में भी अगर हमने इंक्रीज करनी है एरिया, डिमिनिश करना है एरिया, ऑल्टर करनी है उसकी बाउंड्री, just pass a normal standard law. If it is a state, then well, you get the recommendation of the president in, and basically यहाँ पे
अगर प्रपोजल में एरिया बाउंड्री या नाम है, वेल यू आस्क द स्टेट लेजिस्लेचर कि हाँ जी भैया कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा हो तो भी वी आर गोइंग अहेड, दैट्स व्हाट द प्रोविजन इज। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आते हैं इस पे। So reason for drafting Article 3, and I want you to let the examiner know that you know this, that when this article was being drafted, princely states were not fully integrated into the Union of India, and there was possibility of reorganization of states on linguistic basis, as you can see from the Constituent Assembly debates, but for your exam, we need not enter into those. So the Constituent Assembly had factored in the reorganization of linguistic base, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे वो जो जनता जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, दे वुड हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, यू मे जस्ट हैव टू रीऑर्गेनाइज दिस। तो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थॉट वी हैव टू मेक दिस प्रोसेस एज सिंपल एज वी कैन, सो दे गेव पार्लियामेंट पूरी पावर। सो देयरफॉर बेसिकली दे ओनली अलाउड कि भाई सिंपल लॉ से अपने आप बदल लेना, ऐसी कोई हर बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो दे देयरफॉर the power of parliament is exclusively and plenary under Article 3, all right, and that's how you write an answer. So it's unqualified and absolute. Plenary means unqualified and absolute. Therefore, it has been said that India is an indestructible union of destructible units. ठीक है जी। So union में एक बार आप आ गए, अब आप जा तो सकते नहीं, but parliament has the power to alter your boundary, etc., etc. सब काम कर सकते हैं। Subject to the power, जो ये जो plenary power है, it is subject to recommendation by president because bill cannot be moved, but president you already know is a titular head, क्या ही करेगा president, है ना, government just keeps on telling him what to do। अच्छा, फिर से हम आर्टिकल 2 आर्टिकल 3, आई थिंक मैंने पिछले पेज पे ही आपको सारा बता दिया, सो आई नीड नॉट एंटर हियर। एंड एरिया बाउंड्रीज और स्टेट्स, ये ग्राउंड्स जरूर, दिस इज ऑल्सो एन MCQ बाय द वे। सो इट्स व्यू ऑफ द ये स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे लिया जाता है, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड, and your time limit, if the time limit lapses, the state does not get back to the president, again you are not bound if state does not comply with this. Now Article 4 is quite interesting. It says any law referred to in Article 2 or 3 shall contain such provision for the amendment of the first schedule and fourth schedule. So anytime that you are basically using your power under Article 2 and 3, you will be amending first schedule and fourth schedule. What does first and fourth schedule contain? First schedule contains all the list of union territories and states. Fourth schedule is allocation of seats in Rajya Sabha. So anytime you change state, union territory, etc., these schedules get affected. So obviously you are going to be amending the first and fourth schedule. ठीक है जी। अच्छा, and this ये जो पूरी आप जो जन्म गाथा, जो जन्म पत्री आपने चेंज करी, it will be not considered as an amendment under Article 368. Therefore, it need not comply with special requirements of 368 की स्पेशल मेजॉरिटी ला, फिर उस हाउस में पास, कुछ नहीं, सिंपल लॉ पास करो, एक्ट इंट्रोड्यूस करो, पास प्रेसिडेंशियल असेंट, गॉन, ऑलराइट। एंड प्रेसिडेंशियल यूजुअली विल असेंट बिकॉज प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही तो बिल आया था, रिमेंबर। देखिए इन्होंने क्या चक्रव्यूह रचा हुआ है पॉलिटी के अंदर, राइट। सो देयरफॉर इट नीड नॉट comply with special requirements of 368. Parliament thus has a plenary and exclusive power to reorganize states, and that's about it. Acha, mention in your answer the State Reorganization Act 956. I need not enter into details of this. Fazl Ali Commission, सब कुछ मुझे पता, आप लक्ष्मीकांत से रट चुके हैं ऑलरेडी फॉर योर प्रीलिम्स, तो कृपया करके मेंशन करके ही आएंगे। अच्छा, and Article 2, 3 and 4 do not give the Parliament the power to cede territory. Remember that word diminish जो मैंने अभी आपको point out करा था? What do you mean by, let us just have a look at diminish. Diminish the area of any state, does that mean that we can cede territory to a foreign power? This was the question that was raised by the president to the Supreme Court, and such presidential references under 143, and the minimum number of judges required to sit for such a presidential reference is 5, right? So that is given under Article 145. So this question was raised, and the case name is in Re Berubari Union 1960, popularly known as preamble is not part of this constitution, was decided under which case law? ये रटा हुआ है ना आपने, राइट। अच्छा, सो यहाँ पे यही वही वाला केस है जहाँ पे ये डिमिनिश की पावर के बारे में डिस्कशन करी थी। प्रेसिडेंट आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ टेरिटरी टू पाकिस्तान, सो टू गिव अ टेरिटरी, नहीं, he didn't ask सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ टेरिटरी, just ask the question to सुप्रीम कोर्ट कि भाई to give a territory to Pakistan, do we need a constitutional amendment or a simple law will suffice under 3? So Supreme Court held that the word diminish, it does not, it basically this diminish the area of any state means कि आप internal readjustment कर रहे हैं, एक से diminish करा तो दूसरे का बढ़ा दिया internally,
not externally. So they said, this is under Article 3, the parliament does not have power basically to give territory to a state externally. It only has power to basically do things internally. So they said to cede territory, you will need to pass a constitutional amendment, right? So the first ninth constitutional amendment, and ये आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो इंडिया बांग्लादेश वाला हुआ था, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट? अच्छा, एक और केस लॉ है मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ट्राई टू मेंशन दिस इंस्टेड ऑफ दैट पॉडियाल. ये मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट एक्सप्लेन्ड बेरूबारी फर्दर that a constitutional amendment was needed that where de jure and de facto territory is ceded, जो कि हमारे एक्चुअल कंट्रोल में है बाय लॉ, हम दे रहे हैं उसको कि भाई तुम ले जाओ, कोई बात नहीं. बट सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट, इट डज नॉट इक्वल टू सीडिंग ऑफ अ टेरिटरी. सो इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा था, दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, देयर वाज हॉस्टाइल एक्टिविटी गोइंग ऑन ओवर द बाउंड्री डिस्प्यूट इन कच्छ, एंड अ ट्राइब्यूनल फॉर आर्बिट्रेशन के पास हम चले गए थे और उन्होंने अवार्ड करा था. सो क्वेश्चन वाज टू इम्प्लीमेंट दिस आर्बिट्रेशन अवार्ड, do we need to pass a constituent assembly, do we need to pass a constitutional amendment, not constituent assembly, or do we need to pass a law? So Supreme Court said, well, this is purely an executive action, no constitution amendment is necessary. Why? Because इसके अंदर we are not exactly ceding territory. हम तो सिर्फ ये demarcate कर रहे हैं कि भैया ये वाला हमारा था, ये वाला तुम्हारा था, बस सब दोनों खुश, दोनों भाई खुश रहेंगे. हम कोई ऑफिशियली कोई जी मेरे पास पिछले 100 साल से टेरिटरी है, मैं इसको एक्चुअली सीड नहीं कर रहा हूँ. So to settle a land boundary dispute, basically we're not ceding territories, we're not exchanging territories. हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं ये मेरा ये तेरा है, right? So that's purely an executive action से काम हो जाएगा, पार्लियामेंट अपने आप कर ले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है जी. एंड आर्टिकल 1 to 4 ये वाला हो गया. अब इसके बाद एक शॉर्ट आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं RTE पे, राइट? वो उसको अगले लेक्चर में देख लेते हैं. एंड आई बिलीव देन वील हैव वेरी 2 stellar आंसर्स, absolutely bang on point, और काम हमारा रेडी हो जाएगा. ऑलराइट, सी यू इन द RTE lecture. टेक केयर, बाय.